Hello, good evening, everybody. This is Dr. Roy, Dr. Krishandu Roy, back again. Today I'll be giving a small lecture on IPC. I'll be taking up section 497, section 497 of IPC. It is adultery. Now, this offense of adultery, it comes under what? Under matrimonial offenses. So, under matrimonial offenses, there are various offenses. Say, mock marriage, fraudulent marriage, bigamy. So, like that, adultery is also an offense. So, section 497 speaks of the offense of adultery. Now, question is, what is adultery? Now, my dear students, adultery is a physical intercourse in between a married woman and a man. So, married woman and a man. So, first ingredient. That means the lady or the woman has to be married. But the man, he can be a bachelor or he can be married. Doesn't matter. Please try to understand. So, first what has to be constituted? Physical intercourse. So, physical intercourse should be very much there. And it should be in between a married woman or a married lady with a man. The man may be bachelor or may be married. Second is, suppose the man is innocent, but the lady is an abater. The married lady forces the man to have physical relation with her, to have physical intercourse with her. But say the man, he suo moto doesn't go to the lady. It is as because the lady is an abater, so she say pressurizes, or suppose she acts as an abater, and suppose the offense continues, then also what will happen to the punishment part, that I'll tell you. Third is, it should be done without the connivance of the husband. That means the entire thing should go on without the connivance or without the knowledge of the husband. That means the husband has no knowledge about this particular, say, relation. Try to understand. It's very interesting. So, the most unfortunate thing here is that the offense of adultery will be constituted only against the man and not against the lady. That means who will be liable for the offense? The lady, not the lady, but the man. The man is an honest man, is 100% suppose an honest man. And due to the lady, she is doing all these things. Then also no. Always the man will be, he will be charged under the offense of adultery. Is it clear? So what is the first ingredient? First is physical intercourse in between a man and a woman. Man can be bachelor or married, but the female 100% has to be married and not a spinster.
Second. Second is, suppose the lady acts as an abettor, then also the lady will not be punished. Who will be punished? The man will be punished. Before that, another important thing, it is the whole thing must be done without the connivance of the husband of the lady, that he should not have any knowledge. Then only adultery will be constituted. And what about the punishment? It can extend up to a term period of, up to a tenure of 5 years. Sorry, so up to 5 years it can extend. Now, here there is a question that whether this or why this punishment is only attributed, or why this punishment is for the male. Why the male? The female is also equally committing the offense. But section 497 of IPC tells that no, the person is only liable for the offense, and the lady, the husband of the lady, can file a case against a man or against a person. And what will be the charge? Charge will be adultery. Now there are various cases. You'll find Supreme Court rulings. So if you fall back in the year 1954, there was an important case, Yusuf Abdul Aziz versus State of Bombay, 1954. Then another case, Soumitra Vishnu versus Union of India, it is 1985. And then Vishnu Revat versus Union of India, it was in the year 1988. So here, the apex court always held high the provision of 497, and they declared it valid, declared it constitutional. But if you fall back to the recent case of Joseph Shine versus Union of India, the year 2018, here the provisions of section 497 was struck down. It was struck down by the apex court. So what were the reasons, or what was the reasoning behind the judgment? First is, it is violative of Article 14, equality before law and equal protection of law. So equality before law. So male is being victimized, the woman is not being victimized. So, or you can tell, it is the in toto letter of Article 14 has been violated. Why? Because it is not equality before law. The one is getting, another is not getting. Correct? The say, what is that called? Scope. Then is Article 15, prohibition of discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex, place of birth. So here, as she, that means feminine, that means on the grounds of sex, there is a pure discrimination on the grounds of sex. So it is ultra vires to Article 15 of the Constitution. And finally is Article 21, no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law, provided the law should be just, fair and reasonable. You know very well, Manka Gandhi, pre-Manka Gandhi and post-Manka Gandhi, Article 21. Now that means, if adultery is there,
What does it mean? That means the wife has no personal liberty. She is a commodity of her husband, and as because she has done something for that, as a possessor of her, the man, her husband, is getting what? Is getting the scope of filing a case. So definitely it is violative of Article 21, because no person shall be deprived of his life or personal liberty. So personal liberty of a lady, it is purely personal, and no one has the right to poke his nose on her business. But is it so happening here? No. Finally, Section 198 of CRPC, that only husband can bring charge. Husband can bring charge against adultery towards whom? Towards the person who has committed, who was having sexual intercourse. So what about, suppose the person is married, then the person's wife, she should equally get the scope of filing a case against the lady, because she acted as an abater. Suppose she has acted as an abater, or she has given all these things. She has given the entu to her husband, and therefore, no, it is not possible. So that means, say Section 198 subclause 2 of CRPC, it is not valid. So in this particular landmark case, Joseph Shine versus Union of India 2018, so 497 has been declared unconstitutional. Why? On the reasons of, so reasons means on the applicability of, because it is ultra vires to Article 14, 15, 21 and 198 2 of CRPC. You see, because these things are itself, this 198 subclause 2, it is defective. So it should be struck down. Clear? So this is all about adultery. Ingredients you have to remember. It is a very, very easy section, but you have to remember that this is a very important section today. It is a very, very important section, because if you go to the different quarters of the society, you will find this sort of relationship. It is this type. These relationships are cropping. Clear? Now, I will be delivering my lecture in Hindi. अब एडल्ट्री क्या है? देखिए, एडल्ट्री ये जो है, ये ऑफेंस है. कौन सेक्शन में दिया हुआ है? सेक्शन 497 में. ठीक है. अब 497, तो इसमें क्या आता है? मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस जो होता है, मैट्रिमोनियल ऑफेंस, उसमें और ऑफेंसेस है. तो एडल्ट्री एक है. तो एडल्ट्री क्या है? फिजिकल इंटरकोर्स. किसको संग होगा? अ मैन विथ अ मैरिड वुमन. मतलब शादी हो जाना चाहिए लड़की का. अगर लड़की कुमारी है तो ये एडल्ट्री नहीं होता है कि नहीं? पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 इज, ये जो होगा, लड़की का जो हस्बैंड है, इसका कोई नॉलेज नहीं रहेगा. क्या नॉलेज रहेगा? क्या नॉलेज नहीं रहेगा? ये रिलेशनशिप के ऊपर, दैट दिस रिलेशनशिप इज एग्जिस्टिंग. ये जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, ये उनका नहीं रहेगा. और थर्डली, इसका जो पनिशमेंट जो होता है, बोथ आर शेयरिंग द बेड. दोनों क्या कर रहा है? दे आर टेकिंग द बेनिफिट. दोनों ले रहा है. बट लेकिन पनिशमेंट किसका होगा? पनिशमेंट ऑलवेज लड़का का होगा, लड़की का नहीं होगा, है कि नहीं? तो अब क्वेश्चन है, अगर आप पूछिएगा जे डॉक्टर रॉय, अच्छा
कोई अगर शादीशुदा लड़की नहीं है, कुमारी है, इंग्लिश में हम लोग जिनको स्पिंस्टर बोलते हैं, तो उनको संग अगर फिजिकल रिलेशन किसी का है तो ये ऑफेंस नो। अगर इफ देयर इज कॉन्सेंट इट विल कॉन्स्टिट्यूट नो ऑफेंस, है कि नहीं? तो दैट वी आर नॉट डीलिंग हियर, वी आर डीलिंग विथ द रिलेशनशिप इन बिटवीन अ मैरिड एंड मतलब एक लेडी जिसका ऑलरेडी शादी हो गया है, उनको संग कोई जो बंदा जिसका शादी हुआ लड़का का या नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, जे कौन एडल्ट्री का चार्ज ला सकता है? इसका जो हस्बैंड है, वो औरत का जो मर्द रहेगा, तो वही क्या करेगा? ही हैज गॉट द ओनली परमिशन और ही इज द ओनली पर्सन। क्या कर सकता है वो? आपका केस कर सकता है अंडर एडल्ट्री। किसका ऊपर? वो लड़का का ऊपर, उसका बीबी के ऊपर कुछ नहीं, बीबी का छूट है, बीबी का कुछ नहीं, है कि नहीं? तो अब पहले भी बहुत केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, जो हम इंग्लिश में जब बोले आप लोगों को बोले, लेकिन रिसेंटली ये जो जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, इसमें क्या हो गया? दिस पर्टिकुलर ये जो सेक्शन है एडल्ट्री, इट वाज डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। बोला नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? बिकॉज इट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ, मेन एंड वुमन आर इक्वल, है कि नहीं? सो इक्वालिटी बिफोर लॉ। और यू कैन टेल, आप बोल सकते हैं क्यों इक्वल है? दो आदमी है तो दो आदमी को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, एक जन को पनिशमेंट मिलता है, एक जन को पनिशमेंट नहीं मिलता है कि नहीं? तो दिस इज नॉट इक्वालिटी बिफोर लॉ। और क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। यह फेयरर सेक्स है, लेडी है, इसलिए इसको क्या मिल रहा है? छुटकारा मिल रहा है। कोई कुछ ऑफेंस नहीं कर रही है वो, बट शी इज तो इक्वली है कि नहीं? बट उसका पूरा छूट है, पूरा माफ है। तो किसको पनिशमेंट हो रहा है? आदमी का पनिशमेंट हो रहा है। थर्ड, देखो, इट इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या है? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये मेनका गांधी, प्री मेनका गांधी। अब पोस्ट मेनका गांधी क्या हुआ? प्रोवाइडेड द लेजिस्लेचर शुड बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। अब ही हम लोग क्या करते हैं? लेजिस्लेशन को भी चैलेंज कर सकते हैं, है कि नहीं? दैट यू नो वेरी वेल। लेकिन यहां पर देखिए आर्टिकल 21 वायलेशन हो रहा है। कैसे? नो पर्सन, द वेरी लेटर ऑफ द लॉ, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। तो मेरा पर्सनल लिबर्टी क्या है? वो मेरा हस्बैंड विल नॉट डिटरमाइन। हु विल डिटरमाइन? my husband will tell this is your personal liberty. If this is your personal liberty, that I am a commodity, it is commodification of wife. आप क्या, एक तो सामान जैसे होता है, जैसे आपका घर का सोफा हुआ, फ्रिज हुआ, बाइक हुआ, कार हुआ, है कि नहीं, एसी हुआ, तो दीज आर ऑल कॉमोडिटीज। तो बीवी भी आपका कॉमोडिटी है, यू आर कॉमोडिफाइंग है। बीवी कहाँ जाएगा, क्या करेगी, नहीं करेगी, है कि नहीं? तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। तो इसमें ये जो नया जो केस हुआ, जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट हैज स्टक डाउन द प्रोविजंस ऑफ, इट हैज डिक्लेयर्ड सेक्शन 497 एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो रीजंस आई टोल्ड, बस यही छोटा सा है सेक्शन, इसमें कुछ भी नहीं है। जस्ट आपको, इफ यू गो थ्रू दिस वीडियो यू विल अंडरस्टैंड, बहुत इजी है ये, है कि नहीं? दैट्स ऑल फॉर टुडे। यू डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब and definitely your valued comments I want in the drop box. Okay, that's all. Bye.